Yes, ma'am. In last class, I have discussed on standard results. Okay. So these two questions, I think you all have done or are having any doubts. No, ma'am. Okay. So question based on those standard results. Find the nth derivative of 1 upon 1 minus 5x plus 6x square. Solution. तो हमारा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था वो किसके लिए था? What was our standard result? So ये था and a derivative of ax plus b. This is a linear polynomial. So I can use partial fraction and then so I am taking this as y is equals to 1 upon 1 minus 5x plus 6x square. So I can write it as 1 minus this is 6 3 to the 6 so 3x minus 2x plus 6x square. So this is 1 minus 3x and minus 2x common. So this is 1 minus 2 3s are x. So this is 1 upon 1 minus 3x and 1 minus 2x. Okay. Again, I can write it as partial fractions. So 1 upon 1 minus 3x, 1 upon 1 minus 2x. If I so 1 minus 2x means if I'm multiplying this by 3, so 3 minus k 3 to the 6x minus minus 2. So this will be 3 minus 3 to the 6x minus k2 minus minus plus 3 to the 6x 6x cancel 3 minus 1 is 2. So I can write it like this. Okay. So my y is converted as 3 upon 1 minus 3x minus k 2 upon 1 minus 2x, or I can write it as minus. I can take it from here. So I can write it as 2 upon 2x minus 1 and minus from here it is 3 upon 3x minus 1. अब हमारा फॉर्मूला क्या था? Did you remember that dn 1 upon ax plus b was minus 1 की power n and factorial a की power n upon ax plus b की power n plus 1. Okay. So when I will taking nth derivative, so this is dny is equals to 2 is constant. I can take it as outside. So nth derivative of 1 upon 2x minus 1 minus 3 nth derivative of 1 upon 3x minus 1. So 2. Value 2 and b is minus 1. So minus 1 की power n factorial a की power n means 2 to the power n upon 2x minus 1 की power n plus 1 minus 3 minus 1 की power n factorial a means 3 की power n upon ax plus b means 3x minus 1 की power n plus 1. Is it clear? Or I can simplify this as minus 1 2. So minus 2 की power n, or I can write it as minus 1 की power n factorial 2 की power n plus 1 upon
2x minus 1 to the power n plus 1 minus minus 1 power n factorial 3 की power n plus 1 upon 3x minus 1 की power n plus 1. This is your dn of what was y? 1 upon 1 minus 5x plus 6x square. Any doubts in this question? No, ma'am. Question समझ आया? Yes, ma'am. कुछ एग्जांपल्स और करते हैं इस पे बेस्ड. Find nth derivative of x to the power 4 upon x minus 1 x minus 2. Okay. Solution. So can you please tell me how I can uh, solve this? Anyone? Ma'am, add plus 1 and subtract minus 1. Add and subtract 1 from above. X की power 4 plus minus 1. So I am taking y as given function and I am adding 1 and subtracting 1. So that what it will be? X to the power 4 minus 1 can be taken as x square plus 1, x square minus 1. This will be lengthy if you can see that. Okay. So what I can do is I can write it as x to the power 4 upon this is x square minus 3x plus 2 and I can divide it so it is divisible because the power in numerator is greater than the power in denominator. So when I will, so all of you know the division. So x square, that is x to the power 4 minus 3x cube plus 2x square, right? Minus plus minus cancel. This is 3x cube minus 2x square. This is plus 3x, so 3x cube minus 3 3 is 9 x square plus 3 to the 6x minus plus minus cancel minus, so this is 7x square minus 6x. So again I can take plus 7, so that 7x square minus के 7 3 are 21x plus 17 minus plus minus cancel 21 minus 6 is 15x minus 14. Okay, so I can write it as x square plus 3x plus 7 plus 15x minus 14, this remainder upon x square minus 3x plus 2. Is it clear? So I can write it as x square plus 3x plus 7 plus 15x minus 14 upon x minus 1 and x minus 2. Okay, this I can write as x square plus 3x plus 7. ठीक है, 5 15x minus 14 upon x minus 1 x minus 2. Okay, partial fractions करोगे so what it will be 1 upon, so plus x minus 1 plus x minus 2 when I need it, so I will put 1 in place of x, so 15 into 1 minus 14
upon 1 minus 2 and 15 into 2 minus 14 upon 2 minus 1. So this is x square plus 3x plus 7 plus 15 1 is 15 minus, so this is minus 1 because this is minus x minus 1 plus this is 15 to the 13 minus 14 is 16 upon 2 minus 1 is 1 x minus 2. Okay, then you will take nth derivative, implies dn of y is equals to dn of x square plus 3x plus 7 minus dn of 1 upon x minus 1 plus 16 dn of x minus 2. Okay, then apply the same formula जो हमने पहले अप्लाई किया था. तो यहाँ पे देखो, दिस इज अ पॉलिनोमियल. इफ n is greater than 2, then what it will be? This will be 0 minus minus 1 की power n and factorial a की power n, so 1 की power n upon x minus 1 की power n plus 1 plus 16 minus 1 की power n and factorial 1 की power upon x minus 2 की power n plus 1. Okay, so I can take minus 1 की power n and factorial as common. क्या बच गया? 16 upon x minus 2 की power n plus 1 minus 1 upon x minus 1 की power n plus 1 is your answer. Is it clear? इसको लिख लेना n greater than 2 के लिए. ठीक है, because if n is less than 1 तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आ जाएगी. क्वेश्चन समझ में आया? Yes, ma'am. मैम ये समझ में नहीं आया, ये 15 इंटू 1 माइनस 14 कैसे किया? कौन सा? अच्छा, ये वाला. तो ये जब हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं, दिस इज द फॉर्म ऑफ ax plus b upon x plus a and x plus b. तो जब आप इसको समथिंग c upon x plus a plus d upon x plus b, हमें जब ये पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना होता है तो c और d की वैल्यू हमें चाहिए. तो c की जो वैल्यू होती है, अगर मुझे x प्लस a के कॉरस्पॉन्डिंग इस c की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस a इसमें पुट कर दो. दिस इज c. और जब मुझे d की वैल्यू पुट करनी है तो x इक्वल्स टू माइनस b इसमें पुट कर दो. तो जब मुझे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की करस्पॉन्डिंग फाइंड करना था तो मैंने 1 पुट कर दिया यहाँ पे. तो 15 इंटू 1 माइनस 14 अपॉन 1 माइनस 2. जब मुझे x माइनस 2 के करस्पॉन्डिंग फाइंड करना था तो x इक्वल्स टू 2 इसमें रख दिया. तो 15 इंटू 2 माइनस 14 अपॉन 2 माइनस 1. ये पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा होगा प्लस 2 में. यस मैम. तो ये वहीं से आता है. ठीक है, जब इसको आप नॉर्मली पार्शियल फ्रैक्शन में करोगे तो यही वाली वैल्यू पर आ जाएगी. ये वाली वैल्यू है, ये आपके कांस्टेंट की वैल्यू है x minus 1 के corresponding and this is corresponding to 1 upon x minus 2. ठीक है, ओके. यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे. उसके बाद में एक क्वेश्चन कराते हैं लॉग पे बेस्ड. फाइंड nth derivative of log square root 2x plus 1 upon x minus 2. ठीक है,
अब जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था वो किसके कोरस्पॉन्डिंग पढ़ा था, लॉग ए एक्स प्लस बी के कोरस्पॉन्डिंग पढ़ा था। ठीक है, तो पहले हम इसको लॉग ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में रिप्लेस करेंगे। तो वाई क्या गिवन है हमें, लॉग स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो सबसे पहले मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, लॉग 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इसकी पावर 1/2। तो दैट लॉग में ये क्या आ जाएगा, इनिशियल में आ जाएगा log 2x plus 1 upon x minus 2। I can write it as log a upon b क्या होता है, log a minus log b। ठीक है, तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। जब आप इसका nth डेरिवेटिव लेंगे तो 1 अपॉन 2 nth डेरिवेटिव ऑफ log 2x plus 1 minus nth डेरिवेटिव ऑफ log x minus 2। इज इट क्लियर। log ax plus b का फॉर्मूला क्या होता है, dn ऑफ log a x plus b क्या था, this is equals to -1 की पावर n minus 1 n minus 1 factorial a की पावर n upon ax plus b की पावर था ये। तो dn of y is equals to 1 upon 2, हमारा यहाँ पे क्या है, log 2x plus 1। तो ये आ गया -1 की पावर n minus 1 n minus 1 factorial, एक है यहाँ पे 2, तो 2 की पावर n अपॉन 2x प्लस 1 की पावर n माइनस सेकंड वाला क्या है आपका, -1 की पावर n minus 1 n minus 1 फैक्टोरियल, दिस इज x minus 2, तो a की वैल्यू 1 अपॉन x minus 2 टू द पावर n। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 आई कैन टेक कॉमन -1 की पावर n minus 1 एंड n minus 1 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे 2 की पावर n अपॉन 2x प्लस 1 की पावर n माइनस 1 की पावर n इज 1 अपॉन x माइनस 2 की पावर। ठीक है, एनी डाउट, ये आ गया dn ऑफ log स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 की पावर। कोई डाउट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, ma'am. कोई डाउट, No, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फाइंड एन डिफरेंशिएशन ऑफ sin क्यूब एक्स cos स्क्वायर सॉल्यूशन। तो हमें रिजल्ट किसकी कोरस्पॉन्डिंग पता है, या तो साइन की कोरस्पॉन्डिंग पता है या फिर कॉस की कोरस्पॉन्डिंग पता है। तो इस क्यूबिक एंड स्क्वायर को हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई एम टेकिंग एज वाई एज साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर, राइट। तो साइन क्यूब किसके फंक्शन में आता है, साइन 3x के। तो साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। एनीवन, प्लीज टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन 3x। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है,
थ्री sin x minus फोर sin cube x. तो सी एक्स होता है सी साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। तो मैं इस फॉर्मूले से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। क्या आ जाएगी साइन क्यूब एक्स की वैल्यू? सी साइन एक्स माइनस साइन सी एक्स अपॉन फोर, राइट। कॉस स्क्वायर एक्स को, क्योंकि हमारे पास कॉस टू एक्स की वैल्यू क्या होती है? टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कॉस टू एक्स की फॉर्म में क्या आ जाएगी? कॉस टू एक्स प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, आई कैन राइट इट एज वन अपॉन एट सी साइन एक्स कॉस टू एक्स प्लस सी साइन एक्स माइनस साइन सी एक्स कॉस टू एक्स माइनस के साइन सी एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमें साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो आई कैन राइट इट एज वन अपॉन एट सी साइन ए कॉस बी इज वन अपॉन टू साइन ए प्लस बी सी एक्स प्लस साइन ए माइनस बी एक्स माइनस टू एक्स माइनस प्लस सी साइन एक्स माइनस वन अपॉन टू साइन ए कॉस बी अगेन साइन ए प्लस सी to sin 5x a minus b is sin x plus sin x and minus to sin cx. Okay, so this is equals to 1 upon 8 3 by 2 sin 3x. This is sin minus x and minus sin theta is, so sin minus theta is minus sin theta, so minus 3 by 2 sin x plus 3 sin x minus 1 upon 2 sin 5x minus 1 upon 2 sin x and minus 2 sin 3x. Simplify करो 1 upon 8, so 3 upon 2 sin 3x minus 2 sin 3x. That is 1 upon 2 sin 3x. Minus 3 upon 2 minus 1 by 2 is minus 4 upon 2 means minus 2 sin x. And plus के 3 sin x भी था, तो 3 करोगे तो this will be plus 1. So look at plus 3 sin x minus 1 upon 2 sin 5x. I can take 1 upon 2 as common, so 1 upon 16 sin 3x minus sin 5x, and this is plus sin x, 2 की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस के 2 sin. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इज इट क्लियर? अब आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है? ई एन ऑफ साइन ए एक्स क्या था? डी एन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या दिखाया था मैंने? प्लीज टेल मी. ए एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस फाइव बाई टू था. ठीक है, तो यहाँ पे इफ वाई इज दिस, तो डी एन ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 16. ए की वैल्यू 3, तो 3 की पावर एन साइन सी एक्स प्लस 5 by 2 because b is 0 minus 5 की power n sin 5x plus n 5 by 2 and
plus 2 into 1 की power n is 1 sin x plus n pi by this is your. तो कोई भी क्वेश्चन है ना डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए डायरेक्टली आपके फॉर्मूले पे नहीं आएगा, आपको फॉर्मूले पुट करने हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. इज दिस क्लियर? एनी डाउट? आई मूव टू नेक्स्ट टू सेकंड क्वेश्चन. हेलो. हेलो. Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड एन डेरिवेटिव ऑफ e की पावर s cos क्यूब. तो एक्सपोनेंशियल की मल्टीप्लाई में cos या sin होना चाहिए, cos क्यूब नहीं होना चाहिए, राइट? हमारे पास जो फॉर्मूला है, तो y इज e की पावर x cos क्यूब x. अब मुझे बताओ कि cos क्यूब किस में आता है? cos क्यूब कहाँ अपीयर होता है? cos 3x के फॉर्मूले में. cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. यहाँ से मैं cos क्यूब x कैरी ले सकती हूँ, तो e की पावर x cos क्यूब x का फॉर्मूला cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, राइट? तो 1/4 e की पावर x cos 3x प्लस 3 e की पावर x. So this is y and its derivative of y means 1/4 and its derivative of e की power x cos 3x plus 3 and a derivative of e की power x. e की power x cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? क्या था e की पावर x cos का डेरिवेटिव? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यहाँ पे 1, तो दिस विल बी 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n by 2 e की पावर s cos 3x plus n tan inverse b upon a means 3 upon 1 plus 3 into a square plus b square 1 square plus 1 square की power n by 2 e की power s cos x plus n tan inverse b upon a means 1 upon 1. So this is equals to 1 upon 4. 1 square, 3 square is 10 की power n by 2 e की power s cos 3x plus n tan inverse 3 by 2. तो tan inverse 3 by 2 कहाँ आता है? इट इज बिकॉज 3 कहीं भी नहीं आता है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे tan inverse 3 plus 3. 1 square plus 1 square is 2 की power n by 2 e की power s cos x plus n. tan inverse 1 1 कहाँ आता है? 5 by 4. This is not answer. This is your and a derivative of e की power s cos 2. Is it clear? Without कोई डाउट किसी के? No, ma'am. Okay. Then please do one question. Find and its derivative of e की power
3x square 2x and e की power ax cos square x sin x। बताओ दोनों के आंसर्स क्या है। Are you all doing it or having any doubts? Have you worked in fiber manufacturing? संयम अग्रवाल संयम सौम्यदीप Present, ma'am. भावेश भावेश Present, ma'am. गौरव Present, ma'am. वंशिका मिताली सौम्यदीप हो गया क्वेश्चन।
वैशाली, प्रेजेंट मैम। हो गया क्वेश्चन? मैम कर रही हूँ। फर्स्ट हो गया? लो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया? मैम वही कर। आदित्य शर्मा, Present, ma'am. देवांग, Present, ma'am. अर्पित, Present, ma'am. अनमोल, अनमोल, हार्दिक अग्रवाल, Ma'am, you're not audible. hello, am I audible now? Yes, ma'am. अनमोल, हार्दिक, Present, ma'am. Karthik. तन्मय, Present, ma'am. प्रेरणा, प्रेजेंट मैम। हिमांशु, Present, ma'am. प्रणव, प्रणव, निपुण, Present, ma'am. गौरव, Present, ma'am. विपिन, Present, ma'am. तुषार, Present, ma'am. कार्तिक, Present, ma'am. अक्षिता, प्रेजेंट मैम। प्रयाग, Present, ma'am. प्रियांशु, Present, ma'am. श्रेया, प्रेजेंट मैम। डैरल, Present, ma'am. हृदयांश, मैम आपने मेरी Present, अटेंडेंस ma'am. बोल दी। हृदयांश, Present, ma'am. सिद्धांत, Present, ma'am. अवतार, अवतार, भावना, Present, ma'am. गौतम, Present, ma'am. दीपक, Present, ma'am. कुणाल, Present, ma'am. is Deepak present? Ma'am, Kunal. Yes, ma'am. Deepak present, ma'am. Rishit, Present, ma'am. Harit, Harit, Rishabh, Present, ma'am. Manik, Present, ma'am. Vidit, Present, ma'am. Vishalakshi, प्रेजेंट मैम। Vanshika, प्रेजेंट मैम। Shivan, Present, ma'am. Rishika, प्रेजेंट मैम। Karan, Present, ma'am. Aditya, Present, ma'am. Jasleen, प्रेजेंट मैम। Jay, Present, ma'am. Siddharth, Siddharth, Chirag, Present, ma'am. two absentees are Sanyam, Vanshika, Anmol, Ma'am, प्रेजेंट chat मैम। box check करो. who is this? Sanyam, Vanshika, are you absent or present? Vanshika, roll number 217. मैम प्रेजेंट। Anmol, Pranav, 227.
Avtar 241, Harit 247, Siddharth 261. मैम चैट बॉक्स में लिखे हुए हैं इन्होंने। Ma'am, Avtar 241 present. 241 Avtar. Okay. So are you done with question or having any doubts? किसी के कोई doubts हैं तो you can discuss. Ma'am, what is the answer of first question? I can say it. Ma'am, can you check my answer? Yeah, sure. Just a minute. हाँ बताओ क्या आ रहा है आपका आंसर? Ma'am, 3 raised to power n multiplied by e raised to power 3x ब्रैकेट में 1 माइनस कोस 4x अपॉन 2 प्लस 2 e की पावर x साइन 4x। दोबारा बोलो। मैम 3 की पावर n e की पावर 3x मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 4x होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2e 3x साइन 4x। ठीक ओके मैम। इसका आंसर आएगा आपका so if y is e की power 3x sin square 2x so sin square 2x can be written as e की power 3x cos के फॉर्मूले से क्या होगा 1 माइनस cos 4x अपॉन 2 2 ठीक है so this is 1 upon 2 e की power 3x minus e की power 3x upon 2 cos 4x तो यहाँ पे e की पावर x का तो जब आप nth डेरिवेटिव ऑफ y फाइंड करोगे तो 1 अपॉन 2 3 की पावर n e की पावर 3x राइट यस मैम 1 अपॉन 2 दिस इज e की पावर ax cos bx प्लस c का फॉर्मूला लगा दो तो दिस इज 3 3 जा so this is a square plus b square 3 square plus 4 square की पावर n by 2 ठीक है e की पावर 3x एंड 4x की पावर तो 4 की पावर n e की पावर 3x cos 4x plus n tan inverse 4 upon 3 ठीक है तो दिस इज e की पावर 3x 1 upon 2 e की पावर 3x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3 की पावर n minus this is 3 square plus 4 square is 25 25 1 upon 2 I can cancel out so it is 5 की पावर n e की पावर 3x कॉमन ले लिया था ऑलरेडी so this is cos 4x plus n tan inverse 4 upon 3 this is your answer ठीक है और किस किसने क्वेश्चन किया एनी अदर डाउट सेकंड पार्ट किस किसने कर लिया डन विद सेकंड पार्ट हेलो हेलो Yes, ma'am. हो गया सेकंड पार्ट Ma'am, I did the first one. ओके so please do it and ask me if you have any doubts okay
tomorrow morning I will take your doubt class. So all of you please present. तो जिनका CS10 का बैच होता है मॉर्निंग में, अगर CS9 वालों की कोई क्लास है 9:30? No, ma'am. 9:30 कोई क्लास है? Yes, ma'am. है.